तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भवानी। समस्त को आम चैनल साई स्टडी क्लासेस को स्वागत। तो आज तुम मान आमे आउ गोटे नुआ टॉपिक जो थे इंग्लिश आउ किछि न्यू क्वेश्चंस आमे प्रैक्टिस करबा। तार प्रैक्टिस सेट 9 नहीं कि आछे, जोटा तुम मान बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही इफेक्टिव होबो एवं एथरे आमे टॉप 25 क्वेश्चन आलोचना करबा प्रोबेबली। ठीक अछि। ता सहित आमे देखिबा जे कोन कोन सब फैक्ट्स रहउची, कोन कोन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउची जेटा तुम एग्जाम सहित रिलेटेड अछि। ओके, आमे विभिन्न प्रकार विभिन्न सेगमेंट रो क्वेश्चन उठाउछु, बोथ सिटी एंड बीएड रो क्वेश्चन उठाउछु, जा फल तुमको इंग्लिश रो गोटे बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर नॉलेज मिलियो। ठीक अछि। एवं बोथ समस्ते सिटी एंड बीएड पकेया पे चेष्टा करियो। बोथ रे इंग्लिश ता 10 मार्क रो पडुची एवं सेम पैटर्न ही रहउची। ठीक अछि। तो सेति पई समस्त बोथ पकेया में टिके ट्राई करियो। बीएड रो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हे गेलानी, बोधे शायद 10 जून पर्यंत बोधे लास्ट डेट अछि, तो समस्त फॉर्म फिलअप करि नियंतु। ठीक अछि। ता सहित हम वीडियो को आम क्लास को नुआ देखुले, आम चैनल को नुआ आसीथिले ताले आम चैनल को सब्सक्राइब, आम वीडियो को लाइक एवं प्रत्येक क्लास को निश्चित मात्रा आपण मानक संग मात्रा शेयर करंतु, जा फले हमको मोटिवेशन मिलिबा। आमे और नुआ नुआ वीडियोस, नुआ नुआ कंटेंट रो वीडियो आपण मान पई आनी परियो। ठीक अछि। तो थैंक यू। देन एटा हला हमर टेलीग्राम हैंडल, एटा हमर हला यूट्यूब हैंडल, एटा हमर हला छुआ गूगल प्ले स्टोर हैंडल। तो उभय क्षेत्र रे आपण माने हला कोन करि परिबे ना आकु जॉइन करि परिबे, हम चैनल सहित जोड़ी हेई परिबे। ठीक अछि। आज रो प्रथम क्वेश्चन आमे देखियो छुआ, देखो कोन अछि ना, फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑपोजिट मीनिंग एक्सोडस। एक्सोडस, ओके, व्हाट इज द माने मोस्ट एप्रोप्रिएट हला मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सोडस। एक्सोडस रो छुआ मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑपोजिट मीनिंग वर्ड कोन हो? तो समस्त छुआ टिके निश्चित मात्रा रे आंसर दवा पई चेष्टा करंतु। ऑप्शन ए, बी, सी और डी कोटा छुआ एथि मध्य रो आंसर होबो, सेति भाई समस्त आंसर दवा पई चेष्टा करंतु एवं देखंतु केउ टाइप रो क्वेश्चन आछे एवं के भलिया क्वेश्चन रहउची। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब उठा जाउची। ठीक अछि। तो हां, एक्सोडस रो हला कोन ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑपोजिट मीनिंग वर्ड कोन होबो? मिग्रेशन, इनफ्लुक्स एंड रिस्टोरेशन एंड हला कोन ना, रिटर्न। ओके, कोनटा होबो? व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? कोनटा एथि मध्य रुचा सही उत्तर होबो? बुझि पारला कोनटा होबो? जल्दी जल्दी मात्रा रे कमेंट सेक्शन रे कहंतु। समस्त को आंसर को हमें निहाती भाव रे देखे, लाइक करे, ता सहित हमें एप्रिसिएशंस भी देइथाय एवं तुम मान को सपोर्ट ही बहुत ही बड़। ठीक अछि। तो सेति भाई समस्त आंसर देबा पई ट्राई करो, जा फले एंगेजमेंट टा टिके रहबो। एक्सोडस माने कोन जानछ? फास्ट करे एक्सोडस माने हला छुआ बहिर्गमन बा बाहर को पळेबा, पलायन करिबा बा प्रस्थान करिबा। ठीक अछि। ताले एक्सोडस माने बाहर को पळेबा, प्रस्थान करिबा, ताने फेरिबा, रिटर्न होबो। रिटर्न इज द राइट आंसर। ठीक अछि। रिटर्न इज द राइट आंसर। ओके, रिटर्न इज द राइट आंसर। रिटर्न इज द राइट आंसर। ठीक अछि। आउटे जे एटी वर्ड अछि इनफ्लक्स। इनफ्लक्स माने की कोइ परियो? कोइ परियो माने हला कौनसी स्थान को बहु लोकंकर आगमन बा प्रवेश बा जिनिसर प्रचुर आमदानी बा समागम बा अंत प्रभाव, ताकू हला इनफ्लक्स कहा जाय। कोन ना, कौनसी स्थान को बहु लोकंकर आगमन बा प्रवेश बा जिनिसर प्रचुर आमदानी बा समागम बा अंत प्रभाव, एति सब जिनिस को कोन कहा जाय छुआ ना, इनफ्लक्स बोली कहा जाय। टिके भलो भाबरे मन रखियो। ओके, आमे एठी सब गुडी करे आंसर कहि सारलेनी। ठीक अछि। The word exist refers to the mass departure or the immigration of the people. ठीक अछि। ताको आमे कोन कहबा? रिटर्न से सिग्निफिकेंट करिया। Then next देखो छुआ, the most appropriate opposite meaning word graceful. Okay, what is the most appropriate opposite meaning word graceful? Graceful रो most appropriate opposite meaning word छुआ कोन हबो? Extincting, okay, by extincting, expert, miserable, disproportionate कोटा हबो छुआ? which one is the correct answer? कोटा एथि मध्यरु छुआ राइट आंसर हबो ग्रेसफुल रो। ग्रेसफुल रो छुआ कोटा एथि मध्यरु ठीक उत्तर हबो? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिसप्रोपोर्शनेट। ग्रेसफुल माने कोन? डिसप्रोपोर्शनेट माने कोन? ग्रेसफुल माने के कहि परियो? ग्रेसफुल माने हो कोन दिन ना, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। सेते ग्रेस रो रोइबा ओडे ब्यूटीफुल मूवमेंट। ओके, देखो कोन कहिछि?
That the word graceful meanings having elegance and the beauty of the movement. Okay, the appearance of the behavior or the behavior. ए सब जिनस को ग्रेसफुल कहा जाए तार अपोजिट कौन होगा डिसप्रोपोर्शनेट disproportionate implies being uneven, unbalanced, lacking of harmony, which contrary to the concept of the gracefulness. Okay. बहुत ही बढ़िया कथा छुआ एटा माने एई क्वेश्चन उडा बहुत ही एते इंपोर्टेंट एते नॉलेजियस क्वेश्चन तुम माने निश्चित मात्रा रे सब जिंस को मन रखो ठीक अछि जे ग्रेसफुल ऑपोजिट मीनिंग कोन हबो ग्रेसफुल छुआ कहा कहा सहित रिलेटेड देन तुम इजीली एग्जाम रे करि परियो एठी तुम देखो दुईटा सारा जिंस सिनोनिम्स भी एकाथरे क्लियर होउची एंटोनिम्स भी एकाथरे क्लियर होउची तुम गोटे जिंसर माने जानुचो ता सहित तार ऑपोजिट मीनिंग जानुचो तो सेति पई छुआ प्रत्येक क्वेश्चन तुम पई बहुत ही इंपोर्टेंट रहउची तुम माने प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही भल भाव टिके प्रिपरेशन करो बहुत ही भल भाव देखो एवं सांग मान को मध्य शेयर करो ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छुआ फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑपोजिट मीनिंग वर्ड माने कोन प्रिटेंट हां हां प्री प्रिटेंट ओके प्रिटेंट अब बोले प्रिटेंट ठीक अछि इंसिस्टेंट irrelevant irregular कौन irrational कोटा हो छ which one is the correct answer कोटा एथि मधुर छ ठीक हबो कोटा छ प्रासंगिक बा प्रासंचित यार राइट आंसर प्रासंगिक बा प्रासंगित माने लॉजिकल रिलेवेंस जा को जाए एटा इररिलेवेंट यार बोधे राइट आंसर हबो आई थिंक इररिलेवेंट हां यस इररिलेवेंट हबो माने कोन ना सम माने गोटे जिंस सहित हला चल माने समकक्ष करिबा बा समचारित करिबा बा से कथ्या को सपक्ष करिबा आ ओडे इररिलेवेंट ऑपोजिशन हबा ऑपोजिट करिबा बा ता अपक्ष रे रहिबा ठीक अछि ताको कहा जाय कोन इररिलेवेंट ओके नेक्स्ट देखो कौन क्वेश्चन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रिटेंड माने हला कोन ना मोस्ट रिलेवेंट एंड द एप्लीकेबल द पर्टिकुलर मैटर और द सिचुएशन ठीक अछि रिलेवेंट रेफर्स टू समथिंग इज नॉट कनेक्टेड एंड अनरिलेटेड मैटर ठीक अछि फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ विक्टोरियस विक्टोरियस मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑपोजिट मीनिंग वर्ड कोन होबछुआ ऑप्शन बी डिफीटेड जीतिबा हारिबा ठीक अछि जीतिबा हारिबा निश्चित मात्रा विक्टोरियस माने हला अचीव द विक्ट्री और द सक्सेस तार एक्स्ट्रा वीगन्स रे छुआ अर्थ कोन हबो व्हाट इज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा वीगन्स लाइफस्टाइल आ बोधे इकोनॉमिकल ना चीपनेस लाइफस्टाइल कोडा हबो छुआ एक्स्ट्रा वीगन माने वन टाइप ऑफ लग्जूरियस ओके एटी देखिबे देखो लग्जूरियस एंड द इंक्लूडेंस माने माने तमे हला छुआ कोन पूरा धनी टाइप रो बंचुचो एंड गोटे समय रे तुम इकोनॉमिकल टाइप रे बंचुचो इकोनॉमिकल सजेस्ट बीइंग द फ्रूगल thrifty and the using resources wisely ठीक है एक्स्ट्रा वीगन्स हला कोन एक्सेसिव और द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर लग्जरी एंड द एडुलेंस ओके नेक्स्ट देखो तो एटी छुआ हमें एप्रोप्रिएट प्रोनाउन बसेबा The first people to notice a child in need of the speech therapy usually report dash concerns to a doctor or school counselor. कोटा बचवा which one is the correct answer? कोटा एथि मध्यरु छ ठीक उत्तर हबो The first people to notice a child in the need of the speech therapy usually report dash concerns to a doctor or a school counselor माने देयर कंसर्न ओके से कहूची जे प्रथम किछि पीपल सेमान को कंसर्न नेबे जे डॉक्टर और स्कूल काउंसलर मान को कंसर्न नेबे जे किछि पिला मान को थेरेपी दिया जिवो ना नाही ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देयर इज द पैसिव प्रोनाउन दैट इज रेफर टू द पीपल हु नोटिस द चाइल्ड in the need of the speech therapy this is the best child these dash are not green they are black these dash are not green they are black which one konta these things are not green they are black nahi ha mate to ya laguchi tam man ko kon laguchi
बट एटी की हबनी थिंग्स हबनी कार हबनी बैग्स हब दिस बैग्स आर नॉट ग्रीन दे आर बैग सॉरी ब्लैक this word bag is the most appropriate word filling the blank because it's the plural form of bag the other options do not make sentence in the context of sentence sentence context रे another word केबे हला कोन आंसर तयारी करूना ठीक अछि the actor was kind and friendly in dash life as opposed to his nature in his life. माने माने real रे से अलगा real रे से अलगा ठीक है जी real and real हबो real and real हबो बा real and real हबो जेटा है ना गोटे कथा तो से कहि the actor was kind and friendly in the हला कोन real and as opposed his nature in the real life बुझिपारल जैसे कहूँ the actor was एटा धरो सपोज आमे real बसेले एठी real बसेले से कौन कहूँ the actor was kind and friendly in the real life as opposed to his nature in his real life okay माने real life ठारू तारो माने सी पूरा real life रे पूरा ही opposite ठीक अछि पूरा ही opposite okay next question देखो fortune dash the brave एटा तो माने important सहित very famous question एते famous question जे तार हिसाब नाही बहुत ही famous question fortune favors the brave सब बेले हला कोन ना भाग्य कार साथ दिए ना साहस रो साथ देई थाए भाग्य कार साथ देई थाए ना साहस रो ही साथ देई थाए ठीक अछि the dash of how the dog wagged its dash to convey its happiness to humans is very interesting. Tail, 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 and tail, tail. कोणता बच्चा? Which one is the correct answer? The tail of how the dog wagged its tail. Okay, tail to convey its happiness. The humans is very interesting. Okay, एटा गोटे रूढ़ी टाइप दिया टेल माने कोन टेल माने कोन सा की कोई पारियो हु कैन से टेल माने को जल्दी की कोई पारियो जे भी क्लास देख चको अरे एटा देखो मु तुमको रूढ़ी कहनी माने एटा कोन कहानी बा कोनोसी कथा लोक कथा सहित ही रिलेटेड हेतिबो ना नहीं ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो an event causing sudden damage or the suffering if माने ephemeral catastrophe nostalgia and chronology an event sudden damage or suffering माने कोटे इवेंट रे ସେମାନେ sudden damage or suffering पाउजंदी याको हैला कोन ना कोन catastrophe कुआ जाय ठीक अछि catastrophe बोली कुआ जाय the word catastrophe is the event causing the sudden damage or the suffering ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो constant effort to achieve something ताको बोले perseverance कुआ जाय I think perseverance yes माने एटा हला तुमन को पई छुआ माने वेरी इंपोर्टेंट एंड तुम लाइफ रे याकू जते पर्यंत एग्जाम क्रैक न होईची ताको अनुकरण करो जे कांस्टेंट एफर्ट अचीव समथिंग माने तुमे सब दिन प्रयास करथो सब दिन पढुथो निश्चित मात्रा रे हला तुमे कोन पाइबो सक्सेस पाइबो तो ताको परसिवरेंस कुआ जाय कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू जोंडा हला कोन माने देखि हुए न थाए देखि होई न थाए opaque बा opaque the word opaque that cannot be seen through it okay a person who looks at the darker side of the thing जे सदाବେଳେ प्रत्येक जिंसर नेगेटिव टा देखिताए एनिमिसिया पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट एंड सोमनाबुलिस्ट कोनटा बच्चा pessimist सी सदाळे छ नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग हला सब बळे देखिताय ठीक अछि एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून कोन बच्चा एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून फ्लक ओके फ्लक एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून माने फ्लक द एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून इट इज द छडा द फ्रेंच एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून ओके ताको फ्लक बोली कहआ जाय मन रखिबो माने हठात की तुम्हें भाग्यशाली हो जावा हठात की with no appetite
she dashed the food she dashed the food on her plate कौन हबो with no appetite picked about picked on picked at picked up she no appetite she picked at the food on her plate okay next question देखो picked at means to eat very light food in the fuzzy way बहुत ही सुंदर देची the best people were creamed off by the grammar school the best people were creamed off by the grammar school to secure the best part of the something to make someone weak to take something away and to complete defect somebody sorry defeat somebody कोनटा अब अच्छा right answer which one is the correct answer option A to secure the best part of something okay the best people were creamed off by the grammar school to option A to secure the best part of something okay to secure the best part of something next question देखो I now call upon the chairman to address the meeting तने एटा कौन हबो to ask somebody to speak माने लेखा कथा नहीं भाभी पर नहीं to ask somebody to speak है ना नहीं the Mishras occasionally eat out Mishra occasionally eat out कौन हबो छुआ Mishra occasionally eat out माने एला कौन eat out sometimes okay eat out sometimes सेटा कोची जे कौन eat out means to have a meal to a restaurant and another place outside at the home but not necessary every day or never it implies occasionally dining out okay meaning of hold up रो माने कौन hold up माने किसी जिनस को डिले करिवा to keep promise to approve to prevent हबनी to delay करिवा जिनस को डिले करिवा ठीक है to keep promise to keep a promise that would hold up once छाड़ो एठी तो बसैबा हो he is ready to move dash is pet एटा तो माने ए सब क्वेश्चन मते बहुत ही करिया पई बहुत ही भल लागे एवं प्रीपोजिशन बहुत ही बढ़िया लागे कोन हबो he is ready to move with his friend sorry with his pet okay ठीक अछि we use with to indicate accompany someone or something therefore we use she agree that's the idea of our chief cook yesterday कोन हबो छुआ she agreed to the idea of our chief cook okay to कौन पाई बसे हमें बहुत थर कह to indicate the agreement or the acceptance of an idea or the proposal we are living dash Chennai we are living in Chennai ना कौन है बेटा we are living in Chennai है ना नहीं देखिला जଣା पड़ुची एटा वाला ऑप्शन ए हबो बोधे मिस हेजी ऑप्शन ए ऑप्शन सी जगह छ ऑप्शन ए हबो एटा हबो ए ठीक है जी the officials were very enthusiastic that's the target achieved by the employees कौन हबो छ the officials were very enthusiastic about the target okay about the target achieved by the employees mother placed several cup dash the kitchen table decide for over on तो एटार तुम माने छुआ लास्ट क्वेश्चन रे कहबो आंसर ठीक अछि कमेंट सेक्शन रे तो क्लास तुम मान को केमती लागला निश्चित मात्र कमेंट सेक्शन रे जणेबो एठी स्कैन करिवो एवं एठी स्कैन करिवो जा फल टेलीग्राम YouTube चैनल माने हैंडल रे जॉइन हे परिवो गूगल प्ले रे आपण माने ऐप को डाउनलोड करि परिबे एवं हम चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर देबे जा फल हमको हला कोन द मोटिवेशन मिलियो आ तुम माने छुआ पढु थाओ परसिवरेंस रखो कंटिन्यू भावे एफर्ट दियो कंटिन्यू भावे प्रैक्टिस करो निश्चित मात्रा तुम हाथ रे गोटे बीएड सीट कंफर्म भावे रहइबो ठीक अछि
Thank you. Jai Jagannath. Take care. See you again in the next class.